आवाज सुनाई दे रही है? Yes. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Happy New Year, ma'am. Thank you. Same to you. Happy New Year to all of you. Now, children, you all have given the previous exam. In that we had discussed. We had the exam of topic water, but we were in the revision chapter of heat, chapter number 5, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So, what we have done in that chapter, that we have studied about the clinical thermometer, how to measure the temperature, then the structure of thermometer we have done. We had also discussed about the heat and temperature and effects of it. This all we have done. We talk about transfer of heat. So children, in this topic, we have got 3 methods of transfer. कौन-कौन था? आप लोग तो एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके हो. बताओ कौन-कौन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है? Convection, radiation. Convection, Convection, condension, conduction, or radiation. ma'am radiation. Convection, convection, conduction and radiation. ये हम लोग 3 चैप्टर 3 ये मेथड जानते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट का. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ व्हाई इज ट्रांसफर ऑफ हीट वेरी नेसेसरी. मैंने ये इस क्वेश्चन का जवाब दिया. ट्रांसफर ऑफ हीट नेसेसरी क्यों है? व्हाई इज इट नेसेसरी? Anybody? Children, it is a very simple question. ये presence of mind होना चाहिए आप लोग को. Transfer of heat is necessary because if we heat one molecule, one particle, then if it is not transferred to the next particle or molecule, then will the instrument or vessel or whatever you can say heating process we are doing, in that whatever is coming in contact, we will have to heat the whole substance, whole vessel, whole equipment. लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है तो वो हीट क्या होगा? इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द अदर मॉलिक्यूल. इसी के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी किए. अभी आप लोग जैसे बताए कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये आप लोग अभी बोले. तो कंडक्शन मेथड वाज पॉसिबल और कंडक्शन मेथड इज कैरिड आउट इन केस ऑफ सॉलिड. सॉलिड के केस में कंडक्शन मेथड कैरिड होता है और वो मेथड के लिए, उस मेथड को शो करने के लिए सिंपल वे में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे. वो एक्सपेरिमेंट याद है? बटन एक्सपेरिमेंट. Yes, ma'am. याद है या भूल गए? चिल्ड्रन प्लीज रिस्पॉन्स. Yes, ma'am. क्या है वो बटन एक्सपेरिमेंट? बताओ. These are important. It will come in your exam. We have to take a iron rod, some buttons, and a candle. Cover the iron rod with the help of Just in that experiment, we have seen that we will fix equal, say, we will fix the buttons in equal distance on a metallic rod. Now, children, why we are taking metallic rod? Metallic rod क्यों ले रहे हैं? Metal is a good conductor of heat. Metal is a good Metal is a conductor. good conductor of heat, and we can get the
heat transferred from one molecule to the other, and this method is known as conduction. In this method, one molecule will transfer its energy, heat energy, to the other molecule, and it will be carried forward. जैसे कि आप एक रॉड ले लो, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लो, आप जो कुकिंग इक्विपमेंट की है जो आपके घर में अवेलेबल है, आप कोई स्पैचुला या कोई एक मेटालिक वेसल लो और उस पैन को आप हीट कर, जिसमें कि कोई भी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवरिंग या कोई भी दूसरा नाइक्रोम बैकलाइट नहीं लगा हुआ है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, चाहे आप सॉस पैन ही ले लो, तो आप जब उसको पैन को रखते हो गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए, तो वो क्या होता है, उसका जो लोअर बॉटम पार्ट होता है दैट गेट्स हीटेड, लेकिन आप जब उसका हैंडल टच करते हो तो कुछ देर के बाद उसमें जो गर्म कर रहे हो, चाहे वो पानी हो या जो भी बॉईल कर रहे हो, तो आप देखते होंगे कि उसका पैन का हैंडल भी गर्म हो, तो ऐसा क्यों होता है? Just because of the heat transfer from one molecule. Transfer of heat. Like if you take a frying pan, एक फ्राइंग पैन ले लो, अगर उसके हैंडल में बैकलाइट या प्लास्टिक का कवरिंग नहीं लगा हुआ है, तो आप देखोगे कोई आपको कॉटन लेना पड़ेगा या क्लॉथ लेना पड़ेगा टू हैंडल दैट कंटेनर, है ना? ये काम मम्मी भी करती होंगी आपके घर में। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज in which is known as conduction method, in which we will place equal distance of buttons on a metallic rod and we will try to heat it at one end. एक end पर उसको हम heat करना। Now children, why at one end? Because heat can be transferred from the one end of the rod to the another end of the rod. Loudly, those who are speaking, say loudly. Because the heat can be transferred from the one end of the rod in the conduction method, we are trying to prove that heat is being transferred from one molecule to the other. एक molecule से दूसरे molecule पर heat transfer हो रहा है. Now, here what we are saying children, that after a few minutes, 5 minutes, 6 minutes, or it may take according to the amount of heat supplied. अगर आप उसमें हीट कम सप्लाई कर रहे हो, बर्नर लिए हो या आप कैंडल लिए हो, तो रॉड की कैपेसिटी के हिसाब से और उसके अमाउंट ऑफ हीट के हिसाब से वो टाइम अपना ले सकता है, और जब वो हीटेड हो जाएगा तो आप देखोगे कि कुछ देर के बाद आप उस बटन को फिक्स कैसे करोगे मेटल रॉड पर? with the help of wax. With the help of wax. You are going to fix it with the help of wax, because heat, when it is transferred from one end to the other end, you will see that wax will first melt. Then that will make you alert, or that will show that heat has been transferred from one point to the other. And it is slowly and gradually, you will see children, that the first button will fall. अगर मान लो इस तरह से आप रॉड पर बटन लगाते हो, this is your rod, ये आपका रॉड है, और आप पहला बटन लगाए, फिर दूसरा बटन लगाए, फिर तीसरा बटन लगाए, फिर चौथा, क्या है आपके नंबर दिख रहा है, it will take some time. ये जब नहीं होगा, slowly and gradually these molecules will transfer. यहाँ आपका wax हो रहा है. So this is your first, second, third, fourth, and fifth. Fourth button. Will it be possible that the fourth button will fall first or the first button will fall? कौन सा बटन पहले गिरेगा? First button will fall first. Ma'am, first button. It will. You are not getting confused that the fourth button will fall first and the first button will fall later. Why? Reason क्या है? Because the molecules are slowly transferring the heat from one molecule to the other one. अब यहाँ देख लो, यहाँ पे when heat is
फर्स्ट में तो वैक्स मटेरियल लगा हुआ है, उसके पास वो पहुंचेगा हीट, और तब जैसे ही हीट वहां पहुंचेगा आप देखोगे कि वो मेल्ट कर गया, और मेल्ट करने से आपका फर्स्ट बटन फॉल डाउन करते हैं. So that means what? Yes, what do you want to ask? पूछो. Ma'am, please add the students in the class. Yes, They are anybody has any problem? Pardon? कॉल. मैम स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए ना क्लास में. मैम वो लोग कॉल कर रहे हैं बोलने के लिए, ऐड करने के लिए. सब added है. All are added. Okay, now after that, here we were talking that the transfer of heat takes place from one particle to the other, and slowly and gradually you will see that the one by one all the metals will fall, all the buttons will fall down. And this proves that the heat is being transferred from one molecule to the other. और इस तरह से ये प्रूफ होगा कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर धीरे धीरे हीट रीच करेगा, एंड दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कंडक्शन. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Yes, ma'am. समझ में आ गई? Yes, ma'am. Okay. Now, in this topic, we will discuss about conductors and insulators. Now, who is knowing the definition of conductor? Conductor का definition किसको पता है? मैम हमको पता है. बोलिए. Substances which allow heat to flow through them with a ease, they are known as conductor, and the substances which doesn't allow heat to flow through them are known as insulators. Yes. So, Ma'am, you can insulator give is two called bad examples of- conductor also. Yes, बोलो. मैम इंसुलेटर को बैड कंडक्टर भी बोलते हैं. हाँ, insulators are also known as bad conductors. You can give some examples also. कुछ examples भी दे सकते हो. Wood, Conductors or ebony, insulators का. cotton, plastic are some of the bad conductors of the heat. Iron rod is a good conductor of heat. Yes. So till here, children, I think you are not having any problem. No, No, ma'am. ma'am. Now, all metals are good conductor. ये आप ध्यान में रखिएगा. Metals are good conductor, but wood, ebonite, cotton, plastic, cork, thermocol, air, and water are all bad or poor conductors of heat. That is, they are heat insulators. Clear? Now, after that, we will talk about that where we are
using this good conductors and where we are using bad conductors or insulators. This is a part of our life. ये हमारा day to day life का part है कि हम लोग good conductors और bad conductors का use करते हैं ना. तो पहले first of all, the first use of good conductor is in making utensils, cooking utensils. आप देखते होगे डे बाय डे हम लोग थोड़ा अपने कुकिंग यूटेंसिल्स में भी एडवांस होते जा रहे हैं. अलग अलग शेप, साइज, एलॉयज का बेटर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आ रहा है. बट स्टिल वी प्रेफर दैट metals are good conductors of what? Heat. Metals are good conductors and we are utilizing it for our utensils. And the reason behind it is that it can transfer the heat properly. It can transfer heat without any means. These metals are heated quickly and it can transfer heat through their molecules easily, so that the food item then get heated and cooked. And metals also used for making kettles, boilers, then boil tubes for same reason, because it gets heated easily, very easily it can get heated. Then we use insulator like wood, plastic, handles for holding tea, kettles, cooking utensils. These all are also very necessary. अब आप जैसे सपोज कर लो कोई फ्राइंग पैन लेते हो, आपको पैन के बेस से जरूरत होता है ना, कहाँ आप कुक करोगे? बेस पे आपको हीट की जरूरत है, उसके हैंडल पर तो हीट की जरूरत नहीं है. अगर वो आपका इंसुलेटर का बना हुआ है, if it is made of insulator, then what will happen? You can handle it, you can hold it well, you can hold it properly, and you can also work easily and conveniently. अगर आपका हैंडल किस चीज का बना हुआ है? इंसुलेटर का बना हुआ. ठीक है? Because if these handles are made of insulator, अगर वो insulator का बना होगा तो आप उसको heat transfer उसमें नहीं होगा. It will not be able to transfer the heat and you can hold it without catching it with any other support. Like cotton आपको लगाने की जरूरत नहीं होगा, आप हैंडल को पकड़कर और उससे काम कर सकते. Now one very important thing children, ये आपको विलेजेस में देखने को मिलता है कि nowadays in cities and urban areas we are not having houses made up of mud. बहुत कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन विलेजेस में अभी भी ये पॉसिबिलिटी है. तो वो लोग अपने आप को कूल कैसे रखते हैं समर सीजन? For that they are making houses made up of mud and brick. ब्रिक्स और मड के में जब वो लोग घर बनाते हैं तो the direct heat of the sun does not reach the you can say inner part of the rooms, and it can protect by thatching the roofs with straw. रूफ्स को स्ट्रॉ से या मड से थैच करने के बाद आप देखते होंगे कि वो जो मिट्टी का घर रहता है वहां आपको फैसिलिटीज कम होती है. चिल्ड्रन, एज इट कंपेयर टू द urban areas, in rural areas facilities are less to common people, so the common people just search out the alternative source के लिए search out करते हैं, और वो alternative source उनको क्या मिलता है कि वो जो natural process है. So the natural process is by making houses made up of brick thatched with mud. Then the next point is air is known as the bad conductor of heat. Air को bad conductor of heat कहा जाता है.
So that this is a very useful thing that make us keep warm in the winter season. And what do? जो हमारे बॉडी से हीट जनरेट होता है, जब हम ब्लैंकेट लेते हैं तो बीच में एयर ट्रैप हो जाता है, या आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो हम लोग को गर्मी क्यों होती है? वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद गर्म क्यों लगता है? Just because the air is being trapped inside and the body heat is generated, body का heat generate होता है और तब आप देखते होगे कि वो ट्रैप हो जाता है. Air is not allowing it to go out because it is acting as a insulated bad conductor और तब वो आपकी गर्मी को ट्रैप करके आपको गर्मी को बॉडी को गर्म करता है. So in the same way the blanket is also keeping us warm just because we are trapping the body heat or the quilt is trapping the body heat and it is not allowing it to go to the atmosphere. Then next use is for your conductors is and insulators are ice boxes. Every time in the you can say summer season, we are very fond of eating ice. So when we take ice, we just take it from the vendors, and vendors have to carry it from the ice factory. So if it is not protected, then it will melt quickly. So what does it do? It has got such a structure, that ice box has got such a structure that it will not allow the atmospheric heat to escape or come in contact with the container of the ice. So it is made up of double walled. Double walled containers are there, and the layer of air is trapped in between these two walls and does not allow it to escape. And in that way, it protects the ice not to melt quickly, and because it is not coming in contact with the atmospheric air. Clear? Till here, anything what you have not understood, you tell me that. यहाँ तक बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? No, ma'am. ओके, तो एक बच्चा इसको जरा सा रीड कर लो. ट्रांसफर ऑफ हीट, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ हीट यू विल रीड. We often This- We observe often observe the transfer of heat from a hot body to a cold body. Simple function like the ones given below indicate from a hotter body to a colder body. Simple situation like the one given below indicates such a heat transfer. One, when one end of a metal rod is put in a flame, its other end also soon become very hot. Second, when a glass of hot water is left on the table, it becomes lukewarm after some time. lukewarm, luki नहीं पढ़ो, lukewarm. Lukewarm after some time. Third point, when a metal chair is left out in the summer on a hot summer day, it becomes too hot to sit on. In all these cases, transfer of heat take place with the hot object losing some of its heat and the cold object gaining the heat. We therefore say that there is a transfer of heat from the hotter object to the colder object. In nature, there are three different methods of transfer of heat. They are known as conduction, convection, and radiation. Let us understand them one by one. Conduction. This is the most sufficient method of transfer of significant method of transfer of heat in solid. In this method, heat is transferred from one particle molecules of the object to the next and then to the next and so on without the particle leaving their places. The particles just vibrate about their means positions and keep on passing heat energy to their next in line neighborhoods. We can perform a simple activity to observe this method of heat transfer. Activity 5. Take a Ma'am, can I metal. read?
Okay, read it. दूसरे को चांस दे दीजिए बेटा. Take a metal rod, coat it with a thick layer of softened melted wax. Do not coat do not coating careful do the coating carefully without letting the hot melted wax to cause any burns. A suitable Spatula rod. rod spatula rod may be used for this purpose. Fix some small buttons on the wax at regular intervals of say 5 centimeter each. Allow the wax to solidify and harden up. Fix the rod on two metal stands. The heat the heat and the heat And rod heat the rod. and heat the rod at one of its two ends. After some times, we will observe that the buttons start Button. falling down one by one from the side being heated up. This happened because of the transfer of heat through the metal and subsequent melting of the wax. Let us now see whether heat energy is able to go along easily through all solids. We know that when we put one end of a metal rod in a flame, its other end also soon becomes too hot to touch. This shows the heat goes through quickly along a metal rod. Metals are thus good conductors of heat. On doing the same experiment with a wooden rod, we find that the end of the wooden rod held by us does not become hot even after a long time, while the other end may well have burned out by then. This This you are shows the heat. understanding children. ये आप समझ रहे हो ना. जहां आप हीट करोगे वो जल्दी रेड हॉट हो जाएगा और जो दूसरा एंड है रॉड का वो आपको उतना गर्म नहीं लगेगा क्योंकि उस समय तक वहां तक हीट पहुंचा नहीं है. जब वो हीट धीरे 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 ट्रांसफर होगा कंडक्शन मेथड से तब वो दूसरे एंड पर पहुंचे. ठीक है, इसीलिए दूसरा एंड जल्दी गर्म नहीं हो. नेक्स्ट चलिए. On This doing shows the that same experiment with a wooden rod, we find that the end of the wooden rod held by us does not become hot even after a long time, while the other end may well have burnt out by then. This shows the heat cannot easily go along a wooden stick. Wood is thus a bad conductor of heat. Bad conductors of heat are also known as heat insulators. All metals are good conductors of heat, with some of them better than the others. Wood, ebonite, cotton, plastic, cork, thermocol, air, and water are all bad and poor conductors of heat, that is, they are heat insulators. We put both good and bad conductors to many use in our daily life. For example, we use metals to make cooking utensils. Metals, being good conductors, quickly transfer the heat of the flame to the food items and kept inside. The wood items then get heated up and cooked. Metals are also used for making kettles, boilers, and boiler tubes. For the same reason, we use wooden or plastic handles for for holding tea kettles or cooking utensils. These handles help us to hold them even when the objects themselves are quite hot. This is because, being insulators, they do not let the heat to get transferred to our hand. Use of bricks and mud.
for making houses, helps to shield as us from the heat of the sun during summer. These materials are bad conductor of heat and hence do not let the outside heat to reach easily inside the house. We can now also understand why rooms with tin roofs often become very hot during summer. Air is known to be a bad conductor of heat. Blankets, woolen clothes, and quilts help us to stay warm in winter. They all make us Make use. they all make use of the bad conductivity of air. They trap a layer of air between themselves and our body. Such trapping of air is much better in a new quilt than in an old one. Our body heat then does not easily escape out through this trapped air layer and we stay warm. Ice boxes are often made up of double-walled containers. The layers of air trapped between the two walls does not easily let the outside heat reach the ice kept inside the box. The ice therefore does not melt quickly. Okay. Children, I think the topic is clear till here. सबको यहाँ तक कोई दिक्कत है या तो आज बता दीजिए आप लोग. हम No, फिर ma'am. से उस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे. But tomorrow you have to learn. जो भी आप पढ़ चुके हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, you will have to speak on in your own words. आपको आंसर अपने own words में like the topic if you are knowing. So if I ask you a question that what is the how does a clinical thermometer differ from ordinary mercury glass thermometer, तो ये आपको लर्न होना चाहिए कल tomorrow. That is must. अब आप लोग को you have to concentrate mainly on your final exam. Final exam पर concentrate करके और जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका क्लियर आपकी कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके माइंड में और उसको लर्न होना चाहिए. If you are not learning, then you are not you will not be able to write in your paper. ठीक है. तो लॉन्ग आंसर्स आप लोग कल से लर्न करना शुरू करिए. लॉन्ग और शॉर्ट वॉट एवर इज देयर पहले हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे एक क्लास में, फिर दूसरे क्लास में जस्ट टू रिकॉल जो आप भूल गए हो उसको रिकॉल करने के लिए एक बार हम बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. क्लियर? So that will be your work. ये आपका वर्क होगा कल का होमवर्क. And all of you get ready and don't worry about the syllabus. Syllabus के लिए वरी नहीं करो. जो चैप्टर अभी हम रिवाइज करवा रहे हैं उस पर पहले फोकस करो. उसके बाद पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना. हाँ, जो चैप्टर हम रिवाइज करवा रहे हैं वो पूरा चैप्टर पढ़िए. क्वेश्चन आंसर पर केवल कंसंट्रेट करना नहीं है और उसके बीच का जो क्वेश्चन आंसर आपके बैक में दिया हुआ है चैप्टर के बैक में उसको तो आपको लर्न कर ही लेना है, लेकिन in between the chapters also you should know. In between the chapter is must. Then only you can solve all the objective question. तभी आप पूरा objective question को solve कर पाएंगे. ठीक है? Ma'am, what about the results of exhibition? साइंस एग्जीबिशन तो रिजल्ट आपको सीसीए ग्रुप में आ ही गया. मैम वो क्लास 6 का है सिर्फ. नहीं 7-8 का भी आ गया है. मैम एक बार सेंड कर दीजिए. तो हम आप लोग के क्लास ग्रुप में डाल देंगे आज. यस मैम डाल दीजिए. सीसीए ग्रुप में आया. सीसीए में आप लोग एडेड है ना? मैम आया है मैम. हाँ, क्लास जो मिस किया वो देख लेना. मैम एक बार सेंड कर दीजिएगा ना मैम. ओके, आफ्टर द क्लास आई विल सेंड. ठीक है? थैंक यू मैम. आफ्टर द क्लास आई विल सेंड. ठीक है? ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू मैम.